Very good morning, children. Today we are going to do one more comprehension, that is comprehension 5 at page number 93. Children, मैं एक और comprehension इसीलिए ले रही हूँ because you are going to have an unseen comprehension in the upcoming test. Okay, अभी जो test 2 होगा आपकी, in that I am going to give you a comprehension, but that is an unseen. Unseen means I am not going to give any comprehension from the book. Okay, not from your English grammar book. An unseen story will come. You have to read the story twice, go through the story thoroughly, and you have to answer the questions because the questions will be based on MCQ pattern. So it is very easy for you to answer. So बिल्कुल आप comprehension के लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. You just read whatever the story I am going to give there, read it twice, try to understand it, then you have to answer it. Okay, children, let us do this now. Comprehension 5 from your English grammar book at page number 93. Okay, children, read the story below and answer the questions that follow. So in this, what we have to do, we have to read the story carefully. Okay, one day a poor woodcutter goes to cut wood near a river. So children, this is the story of a woodcutter and the fairy, which is a very well known story. I think every one of you know this story, isn't it? Let us go through it again. So एक दिन एक woodcutter था, वो river के पास गया था. While cutting wood, his axe slips from his hand and falls into the river. The woodcutter is cutting the wood. At that time, what happened? His axe means the instrument which he used to cut the wood. Wood cut करने के लिए जो भी औजार वो यूज़ करता है उसको axe बोलते हैं. वो slip होके river में fall हो गया था. Then on losing his axe, losing means he lost his axe, the woodcutter begins to cry. What he has done, the woodcutter begins to cry because that is the occupation on which he is dependent है ना. woodcutter क्या करता था, डेली wood कट करके फिर उसको बेच के अपनी पैसा कमाता था. बट टुडे हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, सो ही इज़ वेरी सैड अबाउट दैट एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. ऑन हियरिंग हिज क्राई, जैसा उसकी क्राई सुना, अ फेरी अपीयर्स बिफोर हिम विथ अ गोल्डन एक्स. तुरंत एक फेरी मीन्स सुंदर, वो एंजल जो होता है ना, वो उसके सामने अपीयर होना, मतलब उसके सामने आई है. किसके सामने? वुडकटर के सामने. किसके साथ? विथ अ गोल्डन एक्स. एक्चुअली वुडकटर का नॉर्मल आयरन एक्स था, बट फेरी केम विथ अ गोल्डन एक्स, बिल्कुल सोने से बना हुआ. इज दिस एक्स yours? She asks the woodcutter, is this yours? Then what the woodcutter says, this is not mine, replies the woodcutter. What is the answer of the woodcutter? अरे सोने की लेके आई तो अरे वाह ये ले लूँ, ऐसा नहीं सोचा woodcutter ने. What he told, this is not mine, ये मेरा नहीं है. The fairy then dives into the water and appears with a silver axe. Children, now underline the word dives. Dives means jump into water. Jump होना, water के अंदर fairy jump होता है क्योंकि again she goes into the water. Dives means the fairy again goes into the water and appears with a silver axe. This time she will bring a silver axe. So first time what the fairy bought, she bought a golden axe. Now this time she bought a silver axe. Silver, चांदी का एक axe लाई थी. Again the same question she asked what it is. Is this axe yours? Is it yours? Then again the woodcutter replies, this is not mine, ये भी मेरा नहीं है. Then the fairy again dives into the water. What the fairy does? Again she goes into the water, she jumps into the water, and this time she appears with an iron axe. What she does? She appears with an iron axe. एक आयरन से बना हुआ एक्स के साथ वो अपीयर होती है. द वुडकटर बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी द एक्स. जैसा आयरन वाला एक्स देखा, वुडकटर बहुत हैप्पी हो जाता है बिकॉज दैट इज़ हिज एक्स एंड टेल्स द फेरी दैट दिस एक्स इज़ हिज. हाँ, ये एक्स मेरा है. The fairy becomes pleased. Underline the word pleased. Pleased means satisfy होना, बहुत खुश होना. Fairy woodcutter के आंसर से बड़ी खुश हो जाती है. क्यों? With the woodcutter for his
honesty. What the word it is? Honesty. What do you mean by honesty? Honesty means ईमानदारी से, बिल्कुल acting truthfully, बिल्कुल झूठ बोलने के बिना सही से जो अपन कोई भी चीज़ को लेते हैं ना, बिल्कुल सही से जब एक्सेप्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं honesty. So what the woodcutter done here he showed his honesty. जैसा फेरी तो बहुत बड़ी सोने की लाई तो खुश हो के अरे ये मेरा है ऐसा नहीं बोला था, वो लालची नहीं हुआ था, उसका जो एक्स है उसको ही देख के वो ज़्यादा खुश हुआ था. सो दैट्स वाई द फेरी बिकम वेरी प्लीज्ड. फेरी बहुत खुश हुई है. किस वजह से? बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर, वुडकटर की ऑनेस्टी से. एंड गिव्स द गोल्डन एक्स एंड सिल्वर एक्स एज गिफ्ट्स अलॉन्ग विथ हिज आयरन एक्स. देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी चिल्ड्रन. कभी भी आप ऑनेस्टली कोई भी काम करेंगे ना, उसका रिजल्ट इट विल बी वेरी ट्रूथफुल, मतलब बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. बिकॉज आप ईमानदारी से अच्छा से मेहनत करके कभी टेस्ट दोगी तो आपकी जो नंबर आए वो ऑलवेज दे विल बी हेल्पफुल. आपको कोई भी काम हो, पढ़ने का काम हो, हेल्प करने का काम हो, हर काम आपको ऑनेस्टी से करना है. सो इट विल बी पेड टू यू बैक. आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा. जैसे इधर वुडकटर ने ऑनेस्टी से एक्ट किया, दैट्स वाई ही गॉट 2 more gifts. Along with his axe he got a golden axe and silver axe also. So children, now let us do the exercises of this comprehension. See, answer the following questions. What happens one day when the woodcutter goes to cut वुड नियर ए रिवर? जब वो वुड कट करने गया था क्या हुआ था? वाइल कटिंग वुड, जब वो वुड कट कर रहा था, द वुड कटर्स एक्स स्लिप्स मतलब उसके हाथ से छूट जाता है. फ्रॉम हिज हैंड एंड फॉल्स इनटू द रिवर, और रिवर में फॉल हो गया. द सेकेंड वन, हु अपीयर्स बिफोर द वुड कटर? हु अपीयर्स? अ फेरी अपीयर्स बिफोर द वुड कटर. एक फेरी अपीयर हुई है. व्हाट डज द फेरी शो द वुड कटर द फर्स्ट टाइम? When the first time the fairy appeared, what the fairy had in her hand? A fairy appears, sorry, the fairy shows the woodcutter a golden axe the first time. जब पहली बार आई थी वो fairy, then what is there in her hand? A golden axe. What does the fairy bring from the water? The second time एक बार appear हुई fairy, then she again dive into the water. After that what she bought for the second time? The fairy brings a silver axe from the water the second time. Second time जब आई है fairy एक सिल्वर चांदी की एक्स लाई थी. Why was the woodcutter happy? woodcutter स्टोरी के बीच में एक बार बहुत खुश हुआ था. What is the situation when he became happy? The woodcutter was happy to see his axe. मतलब और else आप कुछ भी लिख सकता हो, जैसा कि the woodcutter was happy when the fairy bought his iron axe. जब वो अपनी खुद की एक्स देखा तब वो बड़ी खुश नज़र आया था. ठीक है चिल्ड्रन. सो इसमें ऐसा कुछ रटने की कोई चीज़ नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू द स्टोरी प्रॉपरली एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन सेंटेंसेस. इज इट ओके? नाउ लेट अस सी बी. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो. द फर्स्ट वन, द वुडकटर टुक द गोल्डन एक्स. चिल्ड्रन, इज द वुडकटर लिया क्या वो golden axe? No na, so it is false. He also took the silver axe. Did he took the silver axe? No, he didn't, so it is also false. The fairy was pleased with the woodcutter's honesty, isn't it? The fairy was very pleased. The fairy was happy and satisfied with the way how the woodcutter showed his honesty. So obviously this is the true, because fairy बहुत खुश हुई थी. किसके लिए? woodcutter की ईमानदारी देख के. Now the third one, circle the adjectives in the following group of words. Earlier also I told you about adjectives. Adjectives are the describing words, yeah, the words which describe more about a noun. In this, the golden axe, axe मतलब कोई भी axe, it is a common noun. So either golden axe, specially we are talking about golden axe, so the adjective here it is golden. The silver axe, so silver is the adjective here. Now the last one, find words from the passage which mean the same as the following words. मतलब same as the following words मतलब नीचे कुछ words दिया, same ये ही meaning आने वाला कुछ words आपको passage से निकालनी है. देखो children, you can come across like these questions. same word पूछा जाएगा आपको paragraph से, या opposite word synonym या antonyms पूछ सकते हैं हम. So you have to, आपको क्या each and every word को ध्यान से देख के फिर आंसर करनी है. Is it okay children? Now see the first one, presents.
what the word it is, presents means gift. जैसा कि gift की word कहाँ आया हमको, the fairy has given the golden eggs and silver eggs as a gift ना. So present मतलब gifts. To jump into water, I told about this also. We came across a new word, that is dives. What it is? Dives. Dives मतलब to jump into water. Fairy एक बार appear हुआ, then again she dives into water to bring the silver eggs. Again she dives into water to bring the iron eggs. That one. A person who cuts wood. Yes, the person who cuts wood, what he is known as? Yes, obviously it is the woodcutter. Who he is? Woodcutter. So children, this is all about the comprehension 5. So go through the video thoroughly. After that, read the story thoroughly and answer the question on your own. कोई ज़रूरत नहीं है मेरा answers देखने की. You can write in your own words, but the answer should be correct. Is it okay? Thank you.